क्या होगा? Plus 2x. 2x sir. 2x. Okay. Yes. Other students also please reply. 2x. Is that the correct option? 2x. लॉक किया जाए 2x. Yes sir. Okay. So actually such questions should be solvable within 2 minutes only. Don't take more than 2 minutes, even in GATE and IAS examinations also. Formula based questions. So these topics are very important and favorite for the competitive examinations. Even LDE too. Completely formula based. Z transform, Fourier transform also. Okay, so we have discussed up to the 14th only. We have to discuss about Newton's Gregory forward finite difference interpolation. So is there any doubt in these questions? How do we solve or how do you tackle such questions? Is there any doubt? Okay. So let us proceed with the next. We have discussed in the last lecture the operators. Although I think 5 operators we have discussed, isn't it? Forward, backward, then central difference operator, average operator, and then shift operator, isn't it? Now the application of this operator to define the new interpolation, second interpolation, that is Newton's interpolation. So in Newton's interpolation, we are going to discuss about the two interpolations, forward interpolation and backward interpolation. Okay, Newton's forward interpolation and Newton's backward interpolation. In examinations, we can apply any one of the two, or we can decide from the given data whether to apply the Newton's forward or Newton's backward, isn't it? So we have discussed up to this. Now the Newton's forward, is it visible? Yes. Yes, sir. Okay. Newton's forward difference interpolation. So as we know, E of fx, the basic definition of shift operator, E of fx क्या होता है? F of x plus h. So if I consider x in particular, x naught, तो E of f of x naught क्या होगा? F of x naught plus h. तो अगर मैं E की पावर इंक्रीज करता हूँ तो वो फंक्शन उतना शिफ्ट होता है, isn't it? Horizontally, as we know. The change will be in dependent variable, so the shifting will be in horizontal. So e raised to u fx naught क्या हो जाएगा? F of x naught plus uh. Is it okay in this step? Yes, sir. Please reply in chat box. If you are having in trouble in speaking, you can reply the doubts in chat box. Anyways, so e raised to u of x naught is f of x naught plus uh, is it? But I am denoting x naught, f of x naught by y naught. So e raised to u y naught क्या होगा? F of x naught plus uh. Isn't it? इसके करस्पॉन्डिंग y जो है वो y naught ही है. कोई तो रिप्लाई कर रहा है. Just a minute. Okay. So, but as we have the relation, E is nothing but 1 plus delta or 1 plus del, isn't it? E or the shift operator in terms of forward difference operator. तो मैं इस E की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या आ जाएगा? 1 plus delta raised to u of y naught is equal to f of x naught plus uh. अभी मैं क्या कर रहा हूँ? 1 plus delta raised to u को बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपांड कर रहा हूँ. That is a plus b raised to n का फॉर्मूला. We all know about the formula. A plus b raised to n क्या होता है? A nc0, isn't it? nc0 a raised to 0 और a raised to n b raised to 0, nc1 a raised to n. a की पावर डिक्रीज करेंगे हम and b की पावर इंक्रीज करते जाएंगे, isn't it? Up to the highest power. So the same formula we are applying here. So what will be having? A as a 1 and b as a delta and n क्या है हमारे पास? u. तो nc0 क्या होगा? nc0 का हमेशा वैल्यू क्या होता है? 1 होता है. nc1 का वैल्यू n होता है. nc2 का वैल्यू क्या होता है? Am I audible? nc2 का वैल्यू क्या होता है? n into n minus 1 upon 2, right?
2 factorial in fact. nc nc3 का वैल्यू क्या होगा, n to n minus 1 n minus 2 upon 3 factorial and so on, isn't Yes. it? So in this way we can get the coefficient in the binomial expansion. So when I expand this using the binomial expansion, I'll get this 1 plus u delta, because n is u here, isn't it? N is u and b is delta. Please try to get these things, because that is not possible to understand just by visualizing. If you are unable to get the thing, please ask me. A is 1 and b is delta and n is u, isn't it? So when we substitute all these values into the formula, actual formula of binomial induction, we'll get this. Is it okay? This bracket. Okay, and that is operated on y naught is equal to the right hand side f of x naught plus uh. ये step सबको clear है? Because that is the only important step. ये सबको clear है? Please ask if any doubt in this step. Yes. Everyone. Please reply. Okay. तो अभी देखो, this is very important thing. What we can do, we can multiply, or instead of saying multiply, actually this is an operator. Okay, just like capital D we have seen in we have used in fact in LDE. तो ये जो del है और E है, ये सब ऑपरेटर ही है. तो ऑपरेटर का काम क्या है? किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होना और किसी फंक्शन को ऑपरेट करना, isn't it? So that is why we are saying these operator. मतलब फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करके फंक्शन में कुछ चेंज होता है, इसलिए उनको ऑपरेटर बोलते हैं. सो दिस द होल इज जस्ट लाइक अ ऑपरेटर. ये जो है ना पूरा, ये ऑपरेटर है. तो इसको मैं y नॉट के ऊपर ऑपरेट करूंगा. कैसे? 1 into y naught, 1 operated on y naught, I can say y naught plus u delta y naught plus this term operated on y naught and so on. Okay, तो मुझे क्या मिल रहा है? डेल्टा y naught, डेल्टा स्क्वायर y naught, डेल्टा क्यूब y naught and so on. Is it okay? And let us denote this f of x naught plus uh as a y. Okay, so we'll be having, this is just like a Taylor series expansions. I hope you have remember about the Taylor series expansion about the point x naught. क्या होता है? Y is equal to f of x naught plus x minus x naught upon 2 factorial into x square, is it? And so on. ये जो है Taylor series expansion. So उसी के जैसा ही है y in terms of y naught, I can say. So we all know that how to get these terms. Delta y naught का वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा? What is delta y naught? बेसिकली डेफिनेशन वाइज अकॉर्डिंग अगर देखे तो डेल्टा वाई नॉट क्या होता है? y1 माइनस वाई नॉट, राइट? तो डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट अगर आपको रिलेशन मालूम है तो डायरेक्टली आप उस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करके डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. बट इज इट पॉसिबल फॉर ऑल दिस? इज इट? सो दैट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली. It is possible, but that is not possible to solve within a time, isn't it? So instead of that, what we do, we'll prepare a table of all these deltas, isn't it? Delta, delta square, delta cube, just like a forward difference table, isn't it? And from the forward difference table, the top values will be these values: delta y naught, delta square y naught, isn't it? And these values, let me show you those values. These top values are the values of these top values, isn't it? Delta y naught, delta square y naught, delta cube y naught. And we'll substitute these values into the expansion. Where it is? Here. Okay, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम डेल्टा वाई नॉट का, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट का, डेल्टा क्यूब वाई नॉट का. कब तक सब्स्टिट्यूट करेंगे? विल इट बी टर्मिनेटिंग? व्हाट डू यू थिंक? द राइट हैंड साइड इज इनफाइनाइट और टर्मिनेटिंग? फाइनाइट होगा किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए. फाइनाइट होगा ना, क्योंकि हमने एक नोट देखा था कि अगर आपका पॉलिनोमियल सेकेंड ऑर्डर का है तो आपको second order operators will be constant, isn't it? And further all higher order operator will be 0. Right? So when we substitute the values of higher order, then that will be 0, isn't it? So this left hand side will be finite, and that will be a function of x. Though x is not visible here, but this will be a function of x. Let us see how.
So let us consider x naught plus uh as a x. ये जो है आपका x naught plus इसको मैं x बोलता हूँ, तो यहाँ से मुझे u का वैल्यू मिल जाएगा. u का वैल्यू क्या होगा फिर? u will be equals to x minus x naught upon h, right? u will be equals to this. तो अगर मैं ये u का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा दिस y in terms of कौन सा? ये वाला y in terms of x when I substitute the value of u in terms of x, ये वाला. Okay, so this will be my new formula. 1 plus x minus x naught by h delta plus x minus x naught by h into x minus x naught by h minus 1 into delta square y naught plus and so on fx. तो ये जो है इसको बोलते हैं न्यूटन्स ग्रेगरी इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला, either this or this in terms of u. So sometimes from the given values in the problem we'll decide whether to use this formula or this formula. That is our choice. Is that clear to all? Newton's Gregory interpolating formula. Yes, sir. Actually, Newton's and Gregory are the two scientists combinedly derived this formula. That is why the name is Newton's Gregory interpolating formula. So here we have used this shift operator in terms of forward. Now we can derive the similar thing using the backward. That is why the name is Newton's backward interpolating formula or Newton's backward difference interpolation. इंटरपोलेशन का मीनिंग समझते हो आप? आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड इन लैग्रांजेस इंटरपोलेशन. किस लिए कर रहे हैं हम ये सब? बताओ एक बार कोई तो. व्हाई वी आर डूइंग दिस? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस? For approximating polynomial? No, we are not approximating the polynomial. Yes. For knowing unknown values. Exactly. If we have the two values and if we want to get the value in between, isn't it? Someone is saying approximating the polynomial, or we can say approximating the function from the points or the observations, isn't it? Because if we have simply points or the observations, then we cannot approximate the function. But if we get the polynomial related to the points, then we can guess actually the nature of the function. If it is quadratic, then we can say it will be similar to the parabola, isn't it? So that is approximation to the function. Okay, I think that is what you want to say. Anyway, so that is what the purpose of behind these interpolation formulas. These are very important. So the Newton's backward difference interpolation. So we are substituting e raised to we know e raised to minus 1 is 1 minus del. So fx is okay, f of x plus uh will be. Anyways, आप क्या करो? Let us start like this. ऐसे ही स्टार्ट करते हैं हम. e रेस टू f, e ऑपरेटर ऑन एफ एक्स क्या होगा? f ऑफ x प्लस h. तो e रेस टू माइनस 1, यहाँ माइनस 1 लिखा है. तो जब मैं मतलब e रेस टू ये u जो है, ये जो e रेस टू u है, इसको रीअरेंज करके लिखा है e रेस टू माइनस 1 रेस टू माइनस u ऐसे. इज इट ओके? This is the definition of shift operator u times e raised to u fx क्या होगा? f of x plus uh, ये वाला. तो इसमें क्या किया, ये जो u है इसको s से लिखा माइनस 1 इंटू माइनस u. इसमें कोई डाउट? e raised to minus 1, the whole raised to minus u will be e raised to u only, isn't it? And that is operator. अभी आप थोड़ी देर में समझ जाओगे कि xn क्यों लिखा है मैंने यहाँ. Because we can write this Newton's backward around x naught or xn, is it? Just like here we have written around x naught and here I'm writing around xn. So that I'll let you know later. So let us consider it as a function of x only for our convenience. So e raised to u of fx will be f of x plus uh. So e raised to u का एडजस्ट किया मैंने e raised to minus 1 because मुझे backward difference interpolation यूज करना है इसलिए. तो e raised to minus 1 का वैल्यू मुझे मालूम है 1 माइनस डेल. तो यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड इसको फिर से मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपांड कर दिया. तो यहाँ b का वैल्यू माइनस डेल है, a का वैल्यू 1 है एंड n का वैल्यू माइनस u है. तो इन सबको जब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो आई विल गेट द एक्सपेंशन लाइक y इक्वल टू y n.
बिकॉज एक्स एन के करस्पॉन्डिंग अगर आप एफ ऑफ एक्स एन फाइंड आउट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं वाई एन. दैट इज जस्ट नोटेशन. जस्ट लाइक एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग वाई क्या होता है, वाई नॉट. तो एक्स नॉट के एक्स एन के करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या होगा, वाई एन. So y will be equals to yn plus u del yn plus u into u plus 1. This is very important. ना यहाँ u minus 1 है, आप देख सकते हो u into u minus 1 upon 2 factorial. यहाँ u plus 1 है and even all the terms are positive. यहाँ भी positive है वैसे तो, लेकिन it is not always, because आगे जो relation हम देखेंगे उसमें positive नहीं है. ठीक है, तो ये है. And that is called the Newton's backward, Newton's Gregory interpolating formula, which is in terms of del, so that will be backward. Okay. अभी backward को मैं x naught के अराउंड भी लिख सकता हूँ. कैसे? f of x naught plus x naught minus uh will be equals to what? E raised to minus u of f of x naught, right? तो e raised to minus u already हमने लिया है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? e raised to minus 1 raised to u. तो ये क्या हो जाएगा? e raised to minus 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 minus del. तो फिर इसको एक्सपांड कर दिया, ये मिल गया मुझे एक्सपांशन में. एक्सपांशन में किसी को डाउट है? अगर किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क. जस्ट हमने फॉर्मूला यूज किया है a plus b raised to n, where a is 1, b is minus del and n is u. तो एक्सपांड करके फिर से इस ऑपरेटर को y नॉट के ऊपर सेपरेटली ऑपरेट किया हर एक टर्म को, तो आई विल गेट दिस इन टर्म्स ऑफ y नॉट. ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वाई एन है, एंड दिस वन इज अराउंड वाई नॉट. ओके, सो तो कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये सबसे मेन कंफ्यूजन है. तो अगर आपको सिर्फ फाइंड द न्यूटन्स इंटरपोलेशन पूछते हैं, देन यू कैन यूज either forward or backward, isn't it? You will get the similar for interpolating polynomials, isn't it? And in that, if you have given the points, and if they are asking the value of this y, which y, this y at particular value of x, and that given value of x is very much close to the last observation, then we can use this formula in terms of, because xn is the last observation, I can say. I'm starting from x naught, x1, x2 up to xn. So xn is the last one, and corresponding y is yn, isn't it? So, and if they are giving, or if they are asking particular value of this y at xn, then we have to use this. And if the given value of x is very much close to the initial observation, x naught, then we have to use the observation or the y around y naught or x naught, I can say. See this. Is there any doubt with this theory? Newton's forward and backward interpolating polynomials and formulas. Please ask if any doubt. Hello? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. If you have a doubt, it will be cleared in this next example. Please get it clear if you have. Find Newton's interpolating polynomial satisfying the data. So they are simply asking about the Newton's interpolating polynomial. So in that case, choice is ours, whether to use Newton's forward or backward. And we know, we all know about how to get the coefficient, the values of these coefficients. If you want to use the backward, then you should know how to prepare a table of backward differences. If you want to use Newton's forward, then you should know how to prepare a table of Newton's forward interpolations and so on. So here I have used the Newton's forward difference, but that is not necessary again. So here the xi's and corresponding yi's I have given. So I prepared here the forward difference table, isn't it? And I'm getting up to third order forward, I'm getting constant, and from fourth and higher order will be 0. So I'll get the expansions up to third order only, isn't it? So this is my standard substitution, x is equal to x naught plus uh, where x naught is given to be 0 and h, what is h here? h क्या होता है बेसिकली? यहाँ तो h दिया नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है h कहीं है, इनडायरेक्टली तो दिया है मुझे. Sir, 0 to 4 increment by 1, 1. 1, 1, isn't it? तो अगर आपको कभी कभी
इनडायरेक्ट डायरेक्टली दिया भी होता है, लेट h इज इक्वल टू 1 और 2, बट यहाँ दिया नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली है क्योंकि वी आर इंक्रीमेंटिंग दिस x by 1, isn't it? 0 plus 1 1, 1 plus 1 2, so h is nothing but the length of this step, I can say. So that step length is given to be 1, that is why we are taking h is equal to 1. तो h को एंड x नॉट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहाँ से मुझे u का वैल्यू मिल गया, u will be equals to x. तो डायरेक्टली I'll use this formula. Which formula? This formula. Why? In terms of ui's and delta y naught, isn't it? So I'm having u in terms of u as a x, so I'll substitute that and I'll get y in terms of x. You can see here y naught is -4, है ना, delta y naught is 0, delta square y naught is 4, delta cube y naught is 6 and so on. तो ये जो सभी है कोएफिशिएंट्स, इनको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला में, इसमें अप टू थर्ड ऑर्डर, एंड सिर्फ लाइक टर्म्स कंबाइन करूंगा, दैट्स इट. y is equal to x cube minus x square minus 4. So it is very similar to the Lagrange's interpolating. अगर आप इसी को Lagrange से भी सॉल्व करते हो then you'll get this polynomial. ठीक है, तो अगर आपको स्पेसिफिकली पूछता है देन आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. यही मतलब न्यूटन्स ओनली, डजंट मैटर वेदर यू आर यूजिंग द फॉरवर्ड और बैकवर्ड, बट न्यूटन से ही करना पड़ेगा. एंड इफ दे आर आस्किंग सिंपली इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल देन you can use either Lagrange's or Newton's. Even in your practical life also, in somewhere, if you are dealing with the points and if you want to get the intermediate value, then you can use the technique of this interpolation. This is very important. Is it clear to all? Is there any doubt with the first example? No. No, sir. So this is Stirling interpolation. Actually, in the last previous 2015 pattern, this was introduced in the syllabus, but there was no question on this topic. I don't know why. So there was not single question on this topic, Stirling interpolation. But you should know, Stirling's interpolation formula is given in terms of average and central difference operator. Is it y is equal to y naught plus u mu delta y naught plus half u square. I think here mu delta square y naught. Mu is there everywhere in each term, you can see delta square y naught, delta cube y naught and so on. तो mu का वैल्यू तो फिक्स है, तो आपको एक ही बार mu का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड उसको सब्स्टिट्यूट करते जाना है. एंड वी नो हाउ टू प्रिपेयर अ टेबल ऑफ द स्मॉल डेल्टा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, isn't it? तो टेबल से आपको ये जो वैल्यूज है ये मिल जाएंगे सब, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. दैट विल बी योर स्टर्लिंग्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला. तो रिमाइंडर टर्म जो होता है हर एक एक्सपांशन में, कि कोई भी आपके पास इनफाइनाइट एक्सपांशन है उसमें जो nth टर्म होता है उसको रिमाइंडर टर्म बोलते हैं. एंड दैट सिग्निफाइज द एरर इन दैट एक्सपांशन. किसी भी एक्सपांशन, अगर कोई भी वैल्यू आप एक्सपांशन से फाइंड आउट करते हो देन दैट विल नॉट बी एग्जैक्ट वैल्यू, रिमेंबर. ठीक है, मतलब अगर आपके पास सेवरल पॉइंट्स है एंड इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन फ्रॉम दोस पॉइंट्स, and then you can substitute those points into the expansion formula of by Taylor series expansion of e raised to z or e raised to x, you can say. तो अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो जो कुछ वैल्यू आएगा वो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होगा, isn't it? So एग्जैक्ट नहीं होगा मतलब उसमें कुछ एरर होगा. सो दैट एरर इज सिग्निफाइड बाय दिस nth टर्म. उसको रिमाइंडर टर्म भी बोलते हैं. रिमाइंडर टर्म इन न्यूटन्स ग्रेगरी फार्मूला इज दिस, isn't it? So ये जो है nth टर्म और rth टर्म है, which is मतलब ये जो y है उसको सीरीज में लिखा है, and then this rth टर्म is called the remainder term, we can say. उसको जनरलाइज करके ऐसे लिखा है उन्होंने. रिमाइंडर टर्म इज h raised to n plus 1 upon n plus 1 factorial u raised to n plus 1 f raised to n plus 1 xi. Actually, sometimes such questions will be asked in MCQ, that is what is the error
in the Newton's interpolation formula. So nth term signifies the error, and this is what the nth term or the error or the remainder term I can say. Where what is this xi? The notation xi is varies from x naught to xn, in between, not exactly equal to these boundary values, but in between. मतलब x1 to xn minus 1 आपको xi को vary करना है, and f raised to n plus 1 मतलब उतनी बार आपको differentiate करना है function को. रेस्ट f का पावर मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, f डैश, f डबल डैश, लाइक दैट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, ये भी है टॉपिक, इसके ऊपर भी कभी क्वेश्चन मतलब डायरेक्टली पूछा नहीं उन्होंने, लेकिन ऑनलाइन में पूछते थे, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन. तो वट एवर वी हैव सीन earlier, that is numerical Newton's interpolating polynomials forward and backward, उसी को डिफरेंशिएट करके उन्होंने एक्सप्रेशंस डिराइव किए हैं, उसको न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन बोला है. मतलब just like here, considering Newton's interpolating polynomial, this y naught plus delta, this is Newton's forward interpolation formula, y naught plus u delta y naught plus u into u minus 1 upon 2 factorial delta square y naught and so on. ठीक है, तो इसको क्या किया, पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, इन सबको मल्टीप्लाई करके एक सिंप्लीफाइड फंक्शन लिखा, सो दैट आई कैन डिफरेंशिएट इट इजीली. इसको मैं डिफरेंशिएट मतलब इजीली नहीं कर सकता, इसको मैं इजीली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो इनको मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएशन लिया. As x is equal to x naught plus hu, so u is x minus x naught by h, and since y is a function of, यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि y is a function of u because y is in terms of u, but u किसका function है? u is in terms of x, right? आप यहाँ देख सकते हो, तो y is ultimately will be a function of x. So as y is a function of u, but u is a function of x, so ultimately y is a function of x. So I can differentiate this y with respect to x by chain rule of differentiation. Do you know chain rule of differentiation? That is used in composite functions. तो यहाँ क्या किया, इस एक्सप्रेशन को मैंने u से डिफरेंशिएट किया, एंड देन बाय चेन रूल u को भी x से डिफरेंशिएट किया. दैट इज लाइक दिस, dy by dx will be dy by du into du by dx by chain rule. एंड देन dy by du का वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे, वट एवर द डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू u, वो होगा dy by du. एंड du by dx क्या है? u है मेरे पास x नॉट, ये है ये वाला u, ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, u है x माइनस एक्स नॉट बाय h, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं x से तो क्या हो जाएगा? 1 बाय h, राइट? करेक्ट ना? मतलब x नॉट तो कांस्टेंट है आपका, x नॉट कोई फिक्स वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू, लेकिन x is not a constant, x is variable. So when I differentiate u with respect to x, what will the derivative? 1 by h. Is it okay? That is not 1 because x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 by h है ना? हाँ, मैं खाली x के साथ किया. नहीं, but 1 by x naught is constant actually. We have to separate this h also, no? While differentiating. हाँ सर. तो x नॉट बाय h द कंप्लीट टर्म विल बी कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, लेकिन x बाय h का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू u? 1 बाय h. तो यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो dy बाय dx विल बी 1 बाय h टाइम्स dy बाय du, इजंट इट? तो वट एवर इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है सिंपली h से, इजंट इट? एंड दैट विल बी योर डेरिवेटिव. तो आपको अगर डेरिवेटिव पूछते हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड टू राइट दिस फॉर्मूला and then substitute all these values, delta y naught, delta square y naught, u, h, all of these, you'll get the expression of d or the value of dy by dx. ठीक है यहाँ तक? ठीक है सबको? हाँ सर. हाँ. So similarly, you can redifferentiate, again differentiate this expression to get the second order and higher order derivatives, isn't it? So just try to get this. I'm not going to explain, but we are differentiating this dy by dx again with respect to x. So again by chain rule, as dy by dx is a function of u here, you can see, and u is a function of x, so d2y by dx square will be dy by dx का डेरिवेटिव with respect to u into derivative of u with respect to x. ठीक है, तो डेरिवेटिव of u with respect to x will be again
one more 1 by h, तो ये ऑलरेडी एक 1 by h है, one more 1 by h will be there, so that will be 1 by h square, and फिर इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u, that will be this expression. आप देख सकते हो दिस इज कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा. ये जो है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u क्या हो जाएगा, 1 ओनली, isn't it? ये 1/2 फैक्टर विल बी 0, तो दैट इज डेल्टा स्क्वायर y नॉट एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये है सब. इन टर्म्स ऑफ डेल भी आप डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर सकते हो, ये आपके लिए छोड़ देता हूं मैं. ये एग्जांपल देखते हैं एंड देन विल स्टॉप. सो फॉर द tabulated data, this data, it is asked to find the value of y at x is equal to 0.5 and dy by dx at this. So it is not mentioned there, find the interpolating polynomial or what, isn't it? With the help of this tabulated data, get the value of this y at this x. So I know for this I can use the Lagrange interpolation also. So I have the two choices, whether to use the Lagranges or the Newtons. Newton में भी again दो choices है आपके पास, whether to use Newtons forward or backward. But now here in this problem we have given this particular x. तो आप अगर in particular अगर ये जज कर पाते हो कि ये जो x की वैल्यू है, it is very much close to the starting value, initial value 0, isn't it? That is far from the 5. So I can say this given x is very close to the x naught. So I can use what? Newton's forward interpolation. That is why I used the forward interpolation. Is it clear to all? Yeah. And here it is asked the value of dy by dx as at x is equal to 5.5. तो इसके लिए, and this 5.5 is near to the last observation. So it is expected to use the Newton's backward in terms of yn, and उसका डेरिवेटिव उन्होंने पूछा है. तो आपके पास दो चॉइसेस है, either you can get the value of y in terms of all dels I'm saying, and yns. ये आप समझ रहे हो मैं कौन सा फॉर्मूला बोल रहा हूँ? ये वाला न्यूटन बैकवर्ड, कौन सा? ये वाला फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं, न्यूटन बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ yns. क्योंकि अभी मैं yn यूज करूंगा, क्योंकि जो गिवन वैल्यू दिया है मुझे वो नियर टू xn है. ठीक है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा. बट इससे भी बढ़िया मुझे डेरिवेटिव पूछा है, ये नहीं पूछा है, y नहीं पूछा है, तो डायरेक्टली आई कैन यूज द डेरिवेटिव फॉर्मूला. इफ I'll be able to recall that formula, ये वाला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ, मतलब इसके बाद ये वाला फॉर्मूला, देन डायरेक्टली मैं इसको यूज कर सकता हूँ यहाँ डेरिवेटिव में. समझ रहे हो बात? हेलो, इज देयर एनी डाउट? No. ओके Sir, हाँ हाँ when, sir, I means I want to request you to, can you solve this on board from tomorrow? Means we'll get means इधर Okay, क्या we'll हो रहा है solve. कि खाली देख रहे हैं हम, बाद हाँ, में ये बात तो formula है, देख के नहीं लिखते समझ वक्त पाते. भूल जाते हैं, ऐसा ठीक ऊपर है. ऊपर ही दिमाग में रहते हैं. Okay, I'll plan one lecture on board. Actually, here in college, the beautification work is going on. You may be actually so much disturbance is there. That is why I'm taking here the lecture in cabin. But Okay. I'll plan Sir, to have only on the board. formula and one example based No, on we'll it. solve few examples, complete examples on the board. Okay. In next lecture. So here we have asked y at particular value of x which is close to x naught. That is why I've used the Newton's forward, and I'll get the value of y that is equal to 2.2. Okay. So you can see this value x is equal to 0.5 is in between these two, isn't it? 0 and 1. 0 and 1 के बीच में 0.5, तो उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मुझे मिल रहा है अभी. वैसे तो मेरे पास नहीं था. ठीक है. एंड देयर इज नो एनी स्टैंडर्ड रिलेशन आल्सो इन बिटवीन x एंड y सो दैट आई कैन गेस द वैल्यू ऑफ y. ऐसे भी नहीं है ना? तो इसलिए मुझे इंटरपोलेशन की हेल्प लेना पड़ा. And here, to get the value of derivative here, we construct a Newton's backward difference table, because x is equal to 5.5 is close to x5. That is why. And I'll get dy by dx at this.
ठीक है, तो ये पीडीएफ शायद मैंने सेंड किया है आप सब लोगों को ग्रुप पे, तो आप देख लो ये सब, ये सॉल्व एग्जांपल, and then we'll discuss few more examples on board in the next lecture. Okay, Yeah, shall we sure. stop here now? Is there any question? Sir, in tomorrow's lecture, can you take this? Do we have lecture tomorrow? No, no, direct Next lecture, Monday. Yes, So what you want to ask? sir. This formulas, can you write once and one example? Yes, Quick definitely. Don't worry, my in every lecture I'm taking a quick revision on whatever the topics we have discussed, isn't it? Shreyas asking, sir, why we use backward and not backward operator in this example? Shreyas, what you want to ask? I'm not getting actually. Sir, while differentiating, why Uh-huh. we use backward and not forward? That is what I said, na? Ki given value, see here, they have asked the value of dy by dx at this particular value of x, right? X is equal to 5.5. Shreyas, Okay, sir. hello, and that is close to what? The close to 0 or 5. This value, 5. it is 5, isn't it? And that is xn, na? That is my xn. So that is why I'm using Newton's backward in terms of yn. Is it clear? Okay, sir. Got it. Yes, sir. If they ask the value of dy by dx at particular value x is equal to 0.5 or 0.4 or something else, then I'll use Newton's forward only and I'll differentiate it. Clear? Okay, sir. Got it. Okay. Thank you all. I'm going to stop now. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah.